Good evening, class. Today we are going to start a new chapter of your class. Okay, so our new chapter is totally based on the Civilal book because several types of topic of your Civilal book are generally related to your CBSE NCERT book. So you have to focus and clear all the doubts whatever I am teaching here. So next, our most important topic of today class, and that is Protista. Okay, firstly, clearing the all the doubts, I want to tell you that the Protista is a generally special type of class in which several types of organisms are placed under watching to see how their natures are described by the scientist. Okay, so Protista, the first of all, it has been introduced by E.H. Haeckel. E.H. Haeckel is the great scientist, full form Ernest Haeckel. Okay, in 1866 Ernest Haeckel first time they used the term protesta. इन्होंने सबसे पहले protesta शब्द का यूज किया था in 1866. Okay, now after that the protesta they also concluded that protesta is a word which comes from the Greek word that is called protisto, which means primitive, and primitive means we already studied that primitive means old. Okay, जो पुराने होते हैं उसे हम primitive कहते हैं. So protesta the first time given by Ernest Haeckel in 1866, and it is the old type of cells and concluded maximum types of organisms inside. Okay, now let's take a look of different types of characteristic features of protista. Okay, in biology we have studied several types of phylum, several types of groups, several types of superclasses and subclasses is also there, but protista is the longest among them. Why? Because it is also called dustbin or dustbin can of the phylum. Okay, why? Because protista conclude मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनसाइड देम. ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर कैरी करते हैं. दैट्स व्हाई दे कॉल इट द डस्टबिन कैन और गार्बेज ऑफ द किंगडम. ठीक है, इसलिए हम इन्हें डस्टबिन कैन के नाम से जानते हैं. सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल्स ऑफ this is the dustbin. Okay, and in our home we use generally dustbin on the basis of throwing different types of materials inside, but we have to put like paper, vegetable peels, several types of pens, paper, pen, etc. in same as a dustbin. हम अपने डस्टबिन में बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं. ठीक है, सो डस्टबिन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द डर्ट मटेरियल. ये कलेक्शन जो होता है बहुत सारी चीजों का कलेक्शन करता है. इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर सपोज दिस इज द फाइलम और दिस इज द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा. इस प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिस कारण से ये इनको प्रॉपर डस्टबिन बनाता है. मींस इट इज द सर्वाइवर एंड कैरियर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गार्बेज और डस्टबिन कैन. ठीक है, इसलिए इसे हम गार्बेज या डस्टबिन कैन के नाम से जानते हैं. बट वी विल सी इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो. फर्स्टली वी हैव टू स्टडी दैट जनरली प्रोटिस्टास आर unicellular and eukaryotic also. ठीक है, unicellular they may be made up of single cellular and eukaryotic also, because eukaryotic several types of microorganisms which are usually found in aquatic habitats. Okay, aquatic habitats, most of the protistans are generally found in the aquatic habitats because they have found several types of aquatic natures by which they can easily adapt it to live here. But most important thing is that they are the link between unicellular prokaryotes जैसे किंगडम मोनेरा से लेकर. व्हाई? बिकॉज वी हैव स्टडीड मोनेरा. मोनेरा इज कम्स इन द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किंगडम. तो ये प्रोटिस्टा जो होते हैं ये दोनों के बीच के लिंक होते हैं. ठीक है, these are the link between unicellular prokaryotes किंगडम मोनेरा से एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जैसे किंगडम हमारा फंजाई है, प्लांट है या एनिमल्स है. ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर मेड अप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स दे आर द लिंक बिटवीन ऑफ. ये इनके बीच की कड़ी होती है जिसे हम लिंक कहते हैं. सो प्रोटिस्टा इज अ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड प्रोटिस्टा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. Why? Because it also carry different types of marks left in your exams. So first we have to discuss one by one. According to Ernest Haeckel, the most important point we are going to discuss that according to Ernest Haeckel,
they exhibit the characters of both plants and animals. Most important point is that due to the characters of plants and animals, they are the digenetic. Okay, because digenetic means they carry different types of genetic material, but digenetic here we are using generally. Digenetic means they carry two types of different factors. Okay, they may be digenetic, but they does not concluded that they are concluded by genetic material. So they carry different types of characters like plants and animals. So most important points of Protista is that they carry plants and animals characters, most important. Okay, because several types of phylum does not carry both the, but Protista can keep it. Okay, now next we are going to discuss some more property of Protista. So first one is that they may be autotrophic or heterotrophic. Okay, means Protista generally acquire their food by means of autotrophic or heterotrophic. Okay, by own self, by taking from another person. So that is the most important point, and the most important and most patent question for NEET and PMT purpose is that they are called the garbage can. इन्हें हम garbage can कहते हैं या dustbin कहते हैं, dustbin of classification. Why? Because it consisting various organisms are included in it. क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे organisms included होते हैं, बहुत सारे organisms एक ही थैली के अंदर आते हैं. That's why they are called the garbage or dustbin of classification. इसलिए हम इसे dustbin या garbage can के नाम से जानते हैं. Most important point, you have to learn that topic because in several times the questions arises that which classification is known as the garbage can. Okay, I am giving you one question, so why it is called the garbage can, and you all have to watch all the video properly, and after watching it you all have to submit me your answers in my personal WhatsApp. Okay, it is your first homework. So next, most important point, after the clarification of all the living structures, all the basic structures of Protestant, generally we just go through the different points of structures of Protesta. Okay, now coming to the next part, we have studied in a front page like they are the structures are similar to that of typical eukaryote cells. Okay, generally Protista are unicellular and eukaryotic. So here they carry the eukaryotic cells and it contains membrane bound organelles. Okay, due to the property of eukaryotes, the Protista carry different types of membrane bound organelles. Membrane bound organelles का मतलब suppose ये एक membrane है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो आते हैं, जैसे मे बी माइट्रोकॉन्ड्रिया, मे बी गोल्जी apparatus, मे बी गोल्जी बॉडी, मे बी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मे बी न्यूक्लियस, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ऑर्गेनेल्स इसके अंदर आते हैं और ये बाउंडेड होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. ओके, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टान्स आर मेम्ब्रेन बाउंड organelles structures. Okay, now next take a look of some different cell structures of Protista, because today we are only studying the overlook of Protista group. We will study day by day their reproduction, their mode of nutrition, how the cells divide. Okay, so coming to the next part, in previous I have told you that Protista conclude different types of cell organelles. The first cell organelles, it considered that mitochondria. We know that mitochondria is generally powerhouse of the cell. Why? Because it creates ADP in the cells which process energy during the physiological and metabolical activity which cell carries. That's why mitochondria is important. Okay, now next, Golgi body. We have studied in class 9th and 10th also. If you have any doubt regarding Golgi bodies, you can ask me. Okay, now what is the meaning of ER? So would you like to tell me that what is the meaning of ER? Anyone? Okay, now ER means endoplasmic reticulum. Okay, ER means what? Endoplasmic reticulum, and it also considered that nuclear membrane is present. Nuclear membrane is present means in the cells there is a nucleus. Okay, there is a nucleus, and after the nucleus there is a small membrane like structures are found, and that is called nuclear membrane. Okay, न्यूक्लियस को जो कवर करते हैं उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ न्यूक्लियोलस. ओके,
nucleus and nucleolus is also present. Most important point of protestant cells, they have well developed nuclear membrane. Nuclear membrane means they cover entire nucleus to protect, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक लेयरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, they are also considered nucleus and nucleolus. Nucleus and nucleolus, the inner part are also protestas are generally carried. But the most important functions we are going to discuss that today, and that is beside that cilia and flagella. Okay, so many times we have heard that what is the meaning of cilia and flagella. Okay, cilia and flagella are found in protistans for the locomotion. Locomotion is a special type of phenomena in which and several types of organs are generally used to transfer one place to another, that is called locomotion. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म मोशन कहते हैं उसे हम लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है. बट most of the times the questions arise at that what is the meaning and what is the difference between cilia and flagella, because both the cilia and flagella are required for locomotion, but which one is largest, which one is the smallest, and which has different functions. So let us take an overlook of difference between cilia and flagella. Okay, now here we are going to discuss that cilia means they are very short. Very short means they are very small. Okay, they are very small, maybe small in size, छोटे होते हैं, short होते हैं. Okay, and the sizes ranges between 5 to 10 micron in length. इनकी जो size होती है वो approx 5 to 10 होती है micron. Okay, now next, they are mostly found in eukaryotes. Mostly means only found in eukaryotes. Okay, cilia जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ eukaryotes में होते हैं. But in previous we have studied that the protistans are unicellular and eukaryotes also. Okay, so they are eukaryotes and cilia are only found in eukaryotes organism. Cilia जो है सिर्फ और सिर्फ eukaryotes के organism में पाए जाते हैं, ठीक है. Now next, the occurs throughout the body. जो सीलियास होते हैं which may be occurs throughout the body, ये पूरे बॉडी के चारों तरफ होते हैं, ठीक है, सीलिया. और छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम सीलिया के नाम से जानते हैं. लेट्स टेक अ लुक ऑफ डायग्राम ऑल्सो. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया. अगर हम सीलिया की बात करते हैं, स्पेशल फंक्शन की सीलिया क्या काम करते हैं. सो फर्स्टली सीलिया वर्क एज अ लोकोमोशन. सीलिया का पहला काम है लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. सेकंड फीडिंग. फीडिंग मीन्स समथिंग टेकिंग एज अ फूड. फीडिंग का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं. एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर्कुलेशन. सर्कुलेशन मीन्स the circulations means it is a special type of phenomena in which several types of materials are generally goes inside and different types of waste materials are also excreted from their body. So circulation means in several types of circulation are generally found in human beings and animals also, like blood circulations, oxygen circulation, different types of circulation. So cilia plays an important role of locomotions, feeding and circulation process. Okay, in eukaryotes organisms, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ eukaryotes organisms में होते हैं. So taking as an examples of cilia, अगर सीलिया की बात करते हैं, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. अगर ये सीलिया है तो इनके पूरे बॉडी के ऊपर सीलिया देखने को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज हियर वी हैव स्टडीड दैट इट ऑकर थ्रू आउट द बॉडी. ये पूरे बॉडी पे ऑकर होते हैं लाइक दिस, ठीक है, इसे हम सीलिया कहते हैं क्योंकि सीलिया में हर एक बॉडी के पास आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सीलिया. नाउ नेक्स्ट we have to discuss the last topic of today class, and that is flagella. What is the meaning of flagella? Because in previous we have studied cilia and flagella, both are important for locomotion, but flagella are more longer than cilia. ये cilia से बड़े होते हैं. The sizes ranges between 150 micron. इनकी जो size होती है, जो length होती है, ये approx 150 micron होती है. Next, they are found in both prokaryotes and eukaryotes. Okay, they are the developed part because cilia only eukaryotes में पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो flagella है both prokaryotes और eukaryotes दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है. Now next point is that they occur at a one end of cell. ये सेल के सिर्फ एक ही एंड में पाया जाएगा, जबकि cilia is found in throughout the body. ये पूरे
पूरे बॉडी के थ्रू आउट में थे, लेकिन जो फ्लैजला है ये सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट एंड पार्ट में देखने को मिलता है. लाइक दिस, सपोज this is the structures of any cells and here only one flagella is found, whether it is this side or whether it is this side. या तो वो इस तरफ मिलेगा या तो उस तरफ मिलेगा, लेकिन ये वन एंड में एक ही फ्लैजला होते हैं. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ वी आर गोइंग टू टेक अ स्पेशल लुक ऑफ फ्लैजला, इट इज ओनली यूज्ड फॉर लोकोमोशन. अगर हम फ्लैजला की बात करते हैं तो फ्लैजला जनरली यूज्ड फॉर लोकोमोशन, सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं. और जबकि सीलिया जो थे लोकोमोशन, फीडिंग एंड सर्कुलेशन. नाउ द क्वेश्चंस नंबर सेकंड आई एम गोइंग टू गिव यू. द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजला. ओके, क्वेश्चन सेकंड. एंड क्वेश्चन थर्ड इज दैट व्हिच वन इज एडवांस्ड फॉर्म. सीलिया एंड फ्लैजला में सबसे ज्यादा एडवांस्ड कौन होते हैं एंड व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज एडवांस, और वो एडवांस क्यों होते हैं. यू हैव टू सर्च योर आंसर इन योर बुक एंड इफ यू गेट एग्जैक्ट आंसर यू कैन सेंड मी. बट आई गिवन यू 3 क्वेश्चंस. आफ्टर वॉचिंग ऑल द क्लासेस you have to give me your answers in my personal WhatsApp. Till then, if you get any problems regarding the words of Protista groups, you can ask me. Okay, thank you students.